Okay, so what's up, everybody, and welcome back to the channel. And after a small pause due to some medical emergency and some other stuff, we are back again, stronger, sharper, and more focused than ever. तो 2025 आई थिंक आप लोग सबका अच्छा गया होगा, मेरा भी अच्छा ही था. बट व्हाट अबाउट 2026? सो वी आर हियर टू अगेन सेट आवर माइलस्टोन, क्रश द गोल्स एंड गेट मूविंग, राइट. तो POTD वापस से कंटिन्यू करते हैं प्लेलिस्ट को, एंड विल बी पुशिंग आवर कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग फॉरवर्ड. 4 episodes are already recorded and uploaded, and this is the syllabus which we are going to cover in Java and the DSA 360 beginner to advanced, right? So that was it, and let us move one step closer to our journey, and let us start today's question. आज का क्वेश्चन एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यार, मजाक नहीं. इट्स अ गुड क्वेश्चन. द kth smallest element in a matrix. तो हमने बहुत सारे मिलते जुलते क्वेश्चन कर रखे हैं पास्ट में, लाइक केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एन एरे, केथ लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे, राइट. एंड इससे आपको थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा कि हम किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हैं. तो वो एरे लेट्स से सॉर्टेड हो या अनसॉर्टेड हो, तो हम उसके लिए मैक्स हीप मिन हीप यूज़ करते हैं, राइट. दैट्स गोज आर ऑप्टिमल टेक्निक. और पहला टेक्निक तो ये कि सॉर्ट कर दो एंड जस्ट रिटर्न द केथ इंडेक्स, राइट. तो देखते हैं कि व्हाट आर द अप्रोचेस फॉर दिस वन टू सॉल्व, एंड let us continue. This is actually a good question asked in big companies. So पहला अप्रोच हमारा यही रहेगा. ब्रूट फोर्स अप्रोच यही है कि आप इसको सॉर्ट कर लो, राइट, एंड यू सॉर्ट इट एंड देन रिटर्न द केथ ऑन, राइट. तो बट इसको करने में आपका टाइम और स्पेस कितना चल जाएगा. n क्रॉस m एलिमेंट्स है, राइट. सो अनसॉर्टिंग इज n log n. So n cross m, log of n cross m would be your time, and you'd be utilizing the space as well to store this sorted elements, and then you'll be returning the kth इंडेक्स, राइट. सो अगेन n क्रॉस m स्पेस. तो ये बहुत ही बेकार अप्रोच है, हम इसको आगे नहीं बढ़ेंगे. दूसरा अप्रोच है प्रायोरिटी क्यू को यूज़ करके. तो अगर आपको kth लार्जेस्ट एलिमेंट का एक ड्रायरन याद है तो चीज़ें आसान हो जाएगी. नहीं याद है तो मैं एक बार बता देता हूँ. लेट्स से कि हमारे पास एरे में एलिमेंट्स हैं 7, 10, 4 and 3, and we have 20 and 15, right. And we need to return the थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन दिस वन. तो क्लियरली हमारा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए. दिस इज द स्मॉलेस्ट वन, दिस इज द सेकंड स्मॉलेस्ट, दिस इज द थर्ड स्मॉलेस्ट. 7 आंसर होना चाहिए, राइट. तो हम अगर हमें स्मॉल निकालना है, राइट, तो स्मॉलेस्ट निकालना है तो हम मैक्स हीप को यूज़ करते हैं. अगर हमें लार्जेस्ट निकालना है तो हम मिन हीप को यूज़ करते हैं, राइट. क्यों करते हैं अभी देखो, पता चल जाएगा. और उससे पहले मैक्स हीप और मिन हीप आपको नहीं पता है हीपीफाई कैसे काम करता है, राइट. बेसिकली एक एरे स्ट्रक्चर होता है बट ट्री से विजुअलाइज करते हैं उसे, राइट. तो इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बना रखा हुआ है, आप इसको बस सर्च कर लो व्हाट इज़ हीपीफाई एंड विल गेट कंप्लीट वीडियो ऑन दैट. हाँ, ये रहा वो वीडियो जिसका मैं बात कर रहा था, तो आप इसको देख के समझ सकते हो. कमिंग बैक टू द क्वेश्चन अगेन, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि विल बी यूजिंग दिस मैक्स हीप एंड मिन हीप प्रॉपर्टी. इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर आपने मैक्स हीप में कुछ एलिमेंट्स एंटर करने बोले, लेट्स से 1, 2 and 3, राइट, तो ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, राइट. मतलब 3 पहले आएगा, 2 पहले आएगा, 1 बाद में. अगर आपको पीक करोगे अगर हमने पीक किया इन दिस डेटा सेक्शन मैक्स हीप, तो 3 रिटर्न होगा, राइट. तो हम यहाँ पे वही करेंगे. kth स्मॉलेस्ट है, थर्ड स्मॉलेस्ट, तो हम क्या करेंगे कि पहले 3 एलिमेंट्स को पुश कर देंगे, राइट. तो मैक्स हीप में क्या दिखेगा हमारे पास. 7, पहले 3 एलिमेंट्स को पुश किया हमने, राइट. तो कैसा दिखेगा 10, 7 and 4, राइट. एंड सिमिलरली अगर फोर्थ एलिमेंट को पुश किया हमने, देखा 7, 10, 7, 4 and 3. तो जैसे ही k से बड़ा हो जाएगा विल रिमूव द पीक, राइट. तो हम 10 को रिमूव कर देंगे. द नेक्स्ट एलिमेंट इज 20. तो 20 को अगर करोगे लेट्स से +20, राइट. तो न्यू एलिमेंट्स कैसे रीऑर्डर हो जाएंगे अपने आप. सो 27, 4 and 3, राइट. अगेन द हीप साइज इज ग्रेटर देन 3, so we'll remove the peak element, and automatically the 20 would be removed because that's a max heap, and when you call a peak then the largest element is returned. Again, the next element we want to add is 15, so it would be as 15, 7, 4 and 3. Now there are no more elements left, and still the size of the queue is 4, so we will again remove the peak, that is the greatest element would be removed automatically from this data structure, and you'll be remain with these set of elements, 7, 4 and 3, and you can clearly see that 7 is your answer, right. तो यहाँ पे हुआ क्या है यार, मैक्स हीप हमने मेंटेन किया, राइट. मतलब ये बेसिकली 3 ऐसे इंटीजर्स को मेंटेन किया इसने कि स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट एंड थर्ड स्मॉलेस्ट, राइट. दैट्स द आइडिया हियर. तो हम यहाँ पे वही करेंगे. सेकंड अप्रोच इज pretty simple कि traverse for all the elements, right, and keep on storing in the priority queue, and
once the size of the priority queue has exceed k, like in this case k is equals to 3, in this case k equals to 7, then in that case you need to perform a poll, and once you have entered all the elements, right, there is n cross m, and at last we'll be returning pq.peak, and that would be it, right? Let us see a very quick code walkthrough for this one and then move on with the optimized one. So here is the code. So first we have declared a priority queue. So by default in Java it is a min heap, right? If you want to declare a max heap, then we need to write collection.reverse order, and then we are just iterating for all the elements, that is n cross m, and we are adding the element. We're using pq.add, and at any point of time where the pq size has been, that means our priority queue size have been exceeded by k, then we need to perform a poll operation which will remove the greatest peak of that particular from that bunch of elements that is shown in the priority queue, right? And at last we'll just return the topmost element using pq.peak, and that would be it for this one. Now what would be the time and space? Time and space would be, तो at any point of time, सबसे पहले हम देख लेते हैं कोड में हमने किया क्या. So we have a nested for loop, that is n cross m for sure, and these two are parallel work, right? So what is the time for this one? We are adding an element in a bunch of pool, right? तो at max वहाँ पे n cross m elements होंगे, that means n cross at max we are operating this for all the elements, that is at max n cross m, right? But हम जिस pool में उस element को add कर रहे हैं, right, for that current element, वो pool k size का है, right? वर्स्ट केस में k plus 1 k साइज का है, राइट, एंड देन वी आर एडिंग 1, और जैसे ही बड़ा होता है विल रिमूव दैट एलिमेंट्स, राइट? तो मतलब कि हम वी आर एडिंग इन अ पूल वेयर दैट पूल साइज इज k, so that means this will give me the time complexity of log of k, and similarly this will also give me the time complexity of log of k, right? But since these are the parallel work, so we can say our overall time complexity is nothing but n cross m log of k. And what would be the space? So at any point our maximum size that are getting used in the priority queue is k, so O of k. Now अब जो हमारा आता है वो main approach है यार, 3, that is the optimized one, right? And this is based on the binary search algorithm, right? क्योंकि देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था यार कि रो एंड कॉलम इज सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट? तो इसका फ़ायदा भी तो उठाना होगा. अगर ये नहीं बोलता, अगर इसने लेट्स से अज्यूम करो कि ये लाइन नहीं दी होती, राइट, बस बोलता के स्मॉलेस्ट, सब तो नंबर 1 भी काम करता अप्रोच, एंड आवर मेथड 2 वुड हैव आल्सो वर्क. बट सिंस दे हैव गिवन दैट इट इज सॉर्टेड इन एन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, राइट, तो ये देखते ही सॉर्टेड थिंग पढ़ते ही क्या चमकना चाहिए, बाइनरी सर्च. तो हमें बाइनरी सर्च ला के कुछ सोचना पड़ेगा. तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब देखो हमें हार्ड एंड बाइनरी सर्च में क्या होता है कि वी हैव सम रेंज ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज़ फ्रॉम वी गो फ्रॉम एल टू हाई, राइट? वी कैलकुलेट द मिड, यही कन्वेंशन है, दैट इज लो प्लस हाई बाई 2, एंड बेस्ड ऑन सम सर्टेन कंडीशंस वी देन इग्नोर आवर लेफ्ट हाफ और राइट हाफ, राइट? सिंस अज्यूमिंग वी हैव इग्नोर्ड आवर लेफ्ट हाफ, देन वी आइट्रेट इन दिस थिंग. Our new L becomes m plus 1, and the new high and the high remains as it is. Then we again perform the binary search, that is get the mid, and then based on that again the same लॉजिक वी नेग्लेक्ट द राइट और लेफ्ट हाफ, राइट? तो ऐसे हमारा विंडो कम होते जाता है, राइट? तो आप n से n/2 पे चले गए. नाउ यू हैव नैरोड योर सर्च इवन मोर टू n/4 एंड देन n/8 टिल यू गेट द आंसर, राइट? तो इस चीज़ को आप देखोगे, इस सीरीज़ को अपन लॉग इन बोलते हैं, राइट? दैट इज़ वाई बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग इन होता है, राइट? ठीक है. तो यहाँ पे हमें यार ऐसा पता है नहीं कि यहाँ पे L और H क्या है. पहले तो हम L और H फाइंड करना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है, लेट्स अज्यूम कि हमारे पास है 1 5 9 एंड 10 11 13 एंड वी हैव 12 13 एंड 15 एंड वी नीड टू फाइंड फॉर k इक्वल्स टू 3, दैट इज द थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, राइट? तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट तो क्या हो गया यहाँ पे 1, सेकंड स्मॉलेस्ट इज 5, थर्ड स्मॉलेस्ट 9, तो 9 हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट होना चाहिए, राइट? तो हम इसमें क्या करेंगे कि वी विल डिफाइन L एंड H आवर, हम इतना पता है कि इस एलिमेंट्स के अंदर में ही हमारा कोई एक आंसर है, राइट? सो वी डिफाइन अ बाउंड्री, दैट इज द मिनिमम एलिमेंट, दैट इज एरे ऑफ 0,0 विल गिव यू योर मिनिमम एलिमेंट, दैट इज 1, एंड द एरे ऑफ n, n minus 1, minus 1 will give you the bound of your highest range, that is 1 and 15, right? Now according to the convention, according to the binary search algorithm, we calculate the mid. Now mid is nothing but 15 plus 1, that is 16/2, which will give you 8, right? Now what I need to do is, मेरे को क्या पता करना है, ये जो मिड है, राइट, दिस कुड बी माई वन पोटेंशियल आंसर. अगर आंसर कब हमें मिल रहा है, देखो
आंसर हमें तब मिल रहा है कि हमें कोई ऐसा एलिमेंट मिले जो कि विच हैज़ द नंबर ऑफ काउंट ऑफ एलिमेंट्स लेस देन के, राइट। अगर लेस देन के अगर हमने बोला, लेट्स से हम कुछ ऐसे एलिमेंट को पकड़ते हैं, 15 को पकड़ते हैं, राइट। तो देखो इसमें लेस देन के एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं, मतलब सारे ही छोटे हैं, 1 2 1 2 3 3 5 6 6 3 9, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा आंसर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं यार, राइट। क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को पता चल रहा है कि ये जो 15 है दिस इज ग्रेटर देन, कैसे कैसे बताओ कि ऑब्वियसली मेरे को पता चल रहा है कि 15 जो है लार्जर एलिमेंट है, ऑब्वियसली केथ स्मॉलेस्ट तो नहीं है यार, राइट। तो अगर हमारा काउंट जो है दैट इज़ द काउंट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, एंड जिसके लिए हम चेक करना चाह रहे हैं 15 के लिए, अगर वो लेस देन के हो जाए तब तो हमारा आंसर नहीं मिल सकता है, सिंपल सी बात है, राइट। बट अगर ज़्यादा हो, राइट, अगर यही काउंट हमारा ग्रेटर देन के हो तब हमें आंसर मिल सकता है, बट वी नीड टू चेक फॉर द लोअर वैल्यूज, राइट, करेक्ट। जैसे ही काउंट ग्रेटर देन के, जैसे यहाँ पे 9 है, राइट, 15 के लिए, एंड 9 इज ग्रेटर देन आवर 3, राइट। तो 15 हमारा केथ स्मॉलेस्ट तो नहीं है, बट हमें ये पता चल गया कि हमें लोअर वैल्यूज़ के लिए चेक करना है। मतलब इन दिस केस मैं बोल सकता हूँ कि हमारा जो हाई है वो मिड -1 हो जाएगा, राइट। एंड इन दिस केस आई कैन से कि यहाँ से आंसर मिल नहीं रहा है, हमें रेंज बढ़ाने की ज़रूरत है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो लो है हमारा वो मिड +1 हो जाएगा, राइट। होप दैट मेक सेंस। तो इसका एक ड्राई रन करते हैं और देखते हैं कि हम चीज़ें कहाँ हमें लेके चलती है। ओके ये कैसे हो रहा है? ठीक है, तो हैविंग सेड दैट चलो हम अपना पहला इटरेशन शुरू करते हैं, एंड लेट अस स्ट्राइक अ लाइन at this point, and our low is nothing but the first element, which is nothing but 1, and high is nothing but the last element, that is 15, and our matrix is 1 5 9 10 11 13 12 13 and 15, right. So mid would be nothing but 8. ठीक है, तो अब हमें ये निकालना है कि काउंट ऑफ एलिमेंट्स विच आर लेस देन इक्वल्स टू दिस नंबर, राइट। तो ये कैसे करेंगे यार? इसके लिए हमें एक हेल्पर फंक्शन लगेगा, बट वो हेल्पर फंक्शन कर क्या रहा होगा? आपने एक ऐसा क्वेश्चन किया होगा कि सर्च एन एलिमेंट इन द इन रो वाइज एंड कॉलम वाइज सॉर्टेड मैट्रिक्स। तो उसके लिए हम क्या करते थे कि हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं, इस टॉप टॉप राइट से, राइट। एंड व्हेन आई सी दैट इफ माई करंट एलिमेंट इज वॉट लेसर देन, so let's continue the dry run. So L equals to 1 है, I equals to 15 and M equals to 8, right? So we need to find the count where the element should be less than equals to 8, right? तो हम यहाँ शुरू करते हैं 9 से, and as I can see that the element itself is greater than this 8, right? तो मेरे को छोटे एलिमेंट की तलाश में जाना, राइट। देखो अगर नीचे जाएंगे तो we will ultimately hit a larger element जो हम नहीं चाहते हैं, राइट। So what we will do, we will move in this direction, right? तो मैं इसको हटा देता हूँ। सो वी मूव इन दिस डायरेक्शन, राइट। अब मैंने देखा कि ये जो एलिमेंट है इट इज़ लेस देन इक्वल्स टू 8, राइट। दैट मीन्स इसके लेफ्ट में ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट टू इट्स लेफ्ट वुड बी ऑल्सो बी लेस देन इक्वल्स टू 8, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि देखो इसका नंबर कैसे निकाल सकते हैं? ये जो कॉलम का इंडेक्स है, राइट, मैं कह दूंगा कॉलम +1 एंड आई विल गेट माई नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच इज लेस देन इक्वल्स टू 8 इफ आई एम एट दिस पॉइंट, राइट। मैं कह दूंगा कि काउंट इज नथिंग बट 2, राइट। नाउ आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस पोर्शन, राइट। तो ये पोर्शन कवर कर लिया मैंने। नाउ आई नीड टू चेक कि क्या बाकी के पोर्शन में प्रेजेंट है या नहीं, राइट। तो मैं क्या करूँगा कि देखो मैं खुद अभी राइट से आया था, तो आई नेचुरली आई विल गो डाउन टू सी कि आर देयर एलिमेंट्स ग्रेटर देन लेस देन 8 और नॉट, राइट। देन अगेन आई हिट अ बाउंड विच इज़ ग्रेटर देन 8, राइट। तो इसके नीचे जाऊँगा तो मेरे को बड़े एलिमेंट्स ही मिलेंगे, सो then I will obviously go left, but again I see there's element which is greater than 8, right. So I'll again move left and now I hit the
out of bound condition. Now my this loop, or let's say while loop, will stop here, and I can conclude that there are only two elements in this particular matrix which is less than equals to, right? Now the count is equals to 2, right? What it is greater than or lesser than k. So I can say it is lesser than k, which is 3, right? So in this case, we need to search for we need to neglect our this one, L to mid half, right? So that means our L would be nothing but mid plus 1, which is nothing but 9, right? So our next iteration would be L is equals to 9 and high is equals to 15, which will give me as 15 plus 9, which is nothing but 24, and 24 by 2 will give me 12, right? And again, let us do the diagram again for this one. So this diagram which we are doing, which will be basically one helper function for us. So 10, 11, 13, this would be 12, 13 and 15, right? So mid is 12. Now count. Again, I'm starting from here, and I can see that element is greater than less than 9. So definitely all the elements present in this row till this column would be less than equals to my this 12, right? So count is equals to nothing but column plus 1. So column here is 0, 1 and 2, second index, right? So 2 plus 1, which will give me 3. Now I move down. So again it's 13. I go for an element which is less than equals to 12. So अगर मैं नीचे जाऊँगा 13 down from 13 will give me 15. I'll hit even a higher bound, so I'll move left, and I can see this 10 and 11. So these two are again, so 3 plus 2, again using the same logic, that is column plus 1, and I get this 10 and 11. I again move down, and I can see I hit a upper bound of 12, and I move left, and I can see this one. So here the column index would be 0, and I'll be getting 0 plus 1, which is 1. So there are actually 3 to 5, 6 elements which are less than equals to 12, right? So now our count is equals to 6, which is greater than my k. So I need to store this particular answer, this mid, as a possible answer. But having said that, I also need to check for lower values as well, right? क्योंकि हमें lowest चाहिए, kth smallest चाहिए, right? And then end. So that means high is equals to nothing but mid minus 1, right? So let us do our next iteration. So our new low would be 9, and new high just a second, and new high would be 11, right? Having said that, let's now conclude the diagram faster. So mid would be 10, and again let me write down the elements. So it is 1, 5, 9, 10, 11, 13 and 12, 13 and 15. So starting from here 9, and I will move, no, I will not move anywhere, because this element itself is less than equals to 10, so our count will be incremented by 3 plus. Now I move down, I see 13, I move left, I see 11, I move left again, I see 10, so 3 plus 1 is 10, 3 plus 1 4. Now I move down, where is 12. Now I go for a lower element less than 12, which means I will move left, and I hit out of bound. So my while loop will stop here, and my final count is equals to 4, which is greater than k. So this particular mid can also be my answer. So I'll update my answer to 10, and I will say high is nothing but mid minus 1, that is checking for lower values, right? So I think this would be our one last iteration. So L is equals to 9, and high would be nothing but mid minus 1, that is 9 again, and mid is 9 again, 9. So let us quickly write down the elements again so that we can do our operation. So 12, 13 and 15. So I'm at this point, and this is 9, right? So our count is first of all incremented by 3, that is by these 3 elements, right? And I move down, I see 13, I move left, I see 10, I move left, I see 10, and I want even lower, so I move again left, because moving down will give me a element greater than 10, right? So this is again out of bound, and I'm gonna stop here, right? I am gonna stop here, and the count is 3. So count is equals to 3, which is lesser than k. It is, no, it's not the case, right? So this is exactly, it is equals to k, right? So there would be two conditions, that is one if, which is
less than k, and in the else condition these both will be happening, greater than equals to thing. So again I'll store my answer, which is nothing but 9, and since this is the possible answer, I will say that h is equals to mid minus 1, which would be 8, right? Now our binary search will stop, because what it says that while low is less than equals to high, we perform our binary search, right? So this will stop here, and my final answer, which is storing the value, is 9, and 9 would be returned. And was that the expected answer for this particular input? Yep, that was the expected answer. But feel free to try it even for some more cases. That means maybe you can try it on for the same matrix but for k equals to 2, right? And then you can see how the numbers are changing. That is from how the L is changing, how high is changing, and how mid is changing, right? And but try जरूर से करना यार, आपको और अच्छे समझ में आएगा. But if you are done with the explanation part, आपको समझ में आ गया है, तो आप हम कोड लिखने से चल सकते हैं. ठीक है, तो कोड अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो कोड लिखना शुरू करते हैं. एंड कोड वुड बी लॉट सिंपलर नाउ टू राइट. So we need to remove this priority queue. Let me expand my window, zoom in a bit. So we're going to remove this. One second. Yep, so let us write the steps first. So initialize your low and high pointers, that is low from matrix of 0, 0 and high to n minus 1, n minus 1. Then do the binary search operation and write a helper function here. Helper function that will calculate the number of elements which are lesser than equals to your given target. तो यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो, int helper, and we need to pass that particular element from where I need to, मतलब वो element जिससे हमें less than equals to निकालना है, right? तो दो चीज़ यहाँ पे पास होगी, int matrix and int your target. So I'm just writing x, right? So try to complete this by yourself, these 3 steps, and we can resume again. I hope you were able to do it. So now let us write the code now. Okay, so here goes our binary search part now. So what would be the steps again? Calculate the mid, and then call the helper function for this one. Then based on some condition, that is count is greater than less than k, and for rest of the condition, that is else, which would be count is greater than equals to k, right? In that case, operate the binary search, and at last we return the answer, right? Let us now quickly write down the steps. So int mid is nothing but low plus high by 2, right? So let's calculate the helper, call the helper function for this one. So int count is equals to helper. We're gonna pass this matrix, and we're gonna pass this mid, right? Now if count is less than k, then in that case we're gonna say L is equals to mid plus 1, right? And in else, that is count is greater than equals to k. In that case, I'm gonna say I'm gonna store my answer as mid, and I'm gonna say mid is equals to high minus 1, right? As we did in the dry run. Not mid, high is equals to mid minus 1, and low equals to mid plus 1. Great, right? That would be it for binary search. Let us now complete the helper function. So here we would be traversing we traverse from the top right index, right? So store that particular index now, first of all. Okay, so here goes our step. So I have defined 2 variables, that is I equals to 0 and j equals to nothing but the last column, right? Now till our I is less than the number of rows, and our j is greater than equals to 0, right? So I'm gonna check if my matrix of I and j is less than equals to my given target, right? In that case, I'm gonna say count plus equals to, so I'm just gonna declare a count variable. So int count is equals to 0. Count plus equals to nothing but column plus 1, that is the current column which we are at, plus 1. So current column is nothing but j, so I'm gonna say j plus 1, right? And I'm gonna move down in the row wise, and the row wise is nothing but I plus plus. If that is not the case, so if that is not the case, then in that, let me ident it, else part, we say column minus minus, that is we move to the left hand side, right? So that means
we're gonna say j minus minus, right? And at last we're gonna say return count. I hope this makes sense. जो हम ड्राइन यहाँ पे कर रहे थे, हम देखो कैसे कर रहे थे, हम यहाँ से शुरू कर रहे थे, राइट? एंड जैसे हमें मिल जाता था एक एलिमेंट विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू दिस मिड 8, राइट? तो हमने इस कॉलम +1 से वैल्यू ले लिया, दैट इज़ नथिंग बट इन आवर केस, इन आवर कोड, दैट इज़ नथिंग बट j+1, राइट? j+1. और फिर हम नेक्स्ट रो में मूव कर गए थे, यहाँ पे नेक्स्ट रो में मूव कर गए थे. सिमिलरली हमें अगर कोई दिस थिंग जैसे यहाँ पे थे, यहाँ पे, राइट? एंड वी गॉट द एलिमेंट, तो नेक्स्ट रो में मूव किए, एंड if that is not the case, then we are moving towards in the column towards left side, right? So that means j minus minus, and that's what I have written here, j minus minus return count. So that would be it, and इसको compile and run करते हैं. While it is compiling and running, what would be the time and space? So time and space would be again the basic binary search, right? So it would be log n, right? But for each binary search, for at every point, we are doing one more operations of counting the elements less than equals to mid, right? That means what is the time complexity for this helper function? So if you will see at max, we are going n times, right? See here, so 1, 2, 3, and then out of bounds. Similarly here, 1, he started from here, 1, 2, 3, 1, 2, 3, and here and then again out of bounds, right? So I can say, again, it is the same complexity of searching for a value k in the row wise and column wise sorted matrix. So I can say it is log n star n. So n log n basically, right? And this n is nothing but the range, right? So here our range is nothing but the max minus minimum, right? So I'm gonna say my final time complexity is log of maximum minus minimum star n, right? This would be my time complexity, and space would be O of what? We're not using any space, we're just using some variables. So O of 1 as space, and that is it for this one. So there are some errors, let me look at it. Okay, so there were some variables miss and match. So since it is n cross n matrix, so मैंने m को remove कर दिया, and here I have updated the correct variables, that is mid here. Here it should also be mid, here mid, and here mid, right? So m and mid थोड़ा confusing हो गया था, m की ज़रूरत भी नहीं थी, and here I passed somewhere m in this line number 20 or 25, that was making the confusion. But yeah, now it's running, and that's the final code. And we have already discussed the time and space. That is it for this one. Till then, keep learning, keep going, bye-bye, and take care, guys. Do not forget to like, share, and subscribe, and do not forget to follow our playlist. Till then, keep learning, keep going, bye-bye, and take care.